the Indians, I wish you to have a very, very joyous independence. All the Indian friends who's watching this video to have a really amazing and blessed Indian Independence Day. 印度独立日快乐 সবাইকে আমার তরফ থেকে অন্তর থেকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা এবং Happy Independence Day in English. Yom Ha'atzmaut Sameach in Hebrew. Happy Independence Day, Azadi. I wish you Independence Day for every Indians. இனிய சுதந்திர நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். I love India and I can say Jai Hind. Hello friends, welcome back. दोस्तों मैं इज़राइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके और इस ब्लॉग में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जो इजरायली लोगों को और बहुत सारे लोगों को पूछ रहे थे यहाँ पे इज़राइल से कि वो इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या जानते हैं। ये जो सवाल और जवाब चल रहा था वो जारी रहेगा इस ब्लॉग में। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम लोग इंटरव्यू करेंगे और पूछेंगे कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या जानते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं। तो ये ब्लॉग को भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, इसको एंजॉय करते रहिए। Friends, now we will ask few questions to one of our colleague, Lulu. Hello. Hi. I have few questions that I am asking everyone. So I will ask those questions to you as well. Like, when you heard the word India, Yes. what comes to your mind first? I feel it is intelligence. You think it's intelligence? It's like good brain. Wow, that's great. The second question is, do you know when did India get independence? Yes. 1947. 7? Yeah, 47. Yeah, exactly, 1947. Yes. From whom did India get independence? From the British, of course. From the British government. Yes, absolutely. So you know actually so much about India. That much at least. And the third question is, which other countries were part of India before independence? Before independence, Pakistan Yes. and Bangladesh. Yes, perfect. Pakistan and Bangladesh. Absolutely correct. Who is the most famous person from India that you know? Oh, I will say someone modern, from modern times. Sure. Master Anand from chess. Master Anand from chess. Yeah. Great. Yes. Grandmaster. He is one of the famous Indian. Yes. So now Lulu, I will ask you two questions. One is one thing you like about India and one thing you dislike about India. Okay. So one thing I think like most people, is the food. Okay. Okay, so food you like the most. Yes, food I like. What I dislike? Well, I haven't been to India really, but from what I came to know, maybe you guys talk very, very, very fast. Okay. Okay, so So- we talk very, very fast. Yes. That you don't like. That difficult to learn the language. Okay, yeah, actually, yeah. Sometimes like if you don't know the language, then it seems like that because Maybe. because I also think when you guys speak Hebrew, then I also find that you people are speaking is too fast. Okay. But yeah, it's true for you as well because we have so many Indian languages and even we Indians talk with each other in English because we don't know all Indian language. So it's true actually. Very nice actually. You know so much about India, and now I would request you to say something and wish our Indian people on the day of our Independence Day. Okay. That would be great. So to all of the Indians, I wish you to have a very, very joyous independence. Thank you. Of course, as a nation with such amazing history and heritage, you deserve more than all to have a prosperous country of your own, and I wish you to have a long and beautiful future ahead, united, and I wish for us, Israel and India, to always be good friends. Thank you very much. Thank you very much. You answer all the questions very nicely, and thank you very much for your time. And we
all Indian wish you success and good health in your life. Thank you. And thank you very much for your time. Thank you. Happy Independence. Bye bye. चलिए अभी हम लोग बात करेंगे यूमी और माइक के साथ। यूमी चाइना से है और माइक इंग्लैंड से है। यूमी एंड माइक। Hi. So my first question is, when you heard the word India, what comes to your mind first? Food. 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 And Mike, what do you think? Sure, also the great food, but also the people of India who I've been fortunate to know and work with in my scientific career, and Hardworking Good people friends. and their wives because they make great food. Yeah, actually many people like Indian cuisines. One thing that you like and dislike about India. So first, like one thing you like about India. I think the culture's really interesting and really vibrant. I have many Indian friends in the UK. So I went to Indian weddings. I loved this actually. It was such Very a colourful. different experience And to colourful. a British wedding, colourful, to a Christian wedding, I should say. And many different musics, dancing, and a lot of fun. Yeah. So Yeah. I really enjoyed this. And Yumi, what do you think? What you like the most about India? The most is two things. The first one is of course food because I love spicy food. Yes. And I used to live above an Indian restaurant and they know to give me the really spicy food. Yes. And that's like really good. And also another thing I really like is the chai tea from India. Like my Indian colleagues always made me those like sweet chai tea. They're my favorites. The chai latte, the ones from The India. Indian tea. Yes, the Indian Chai, tea. yes. Chai, like really good. Those Great. are really my favorites. Yeah. Chinese teas are also very famous. But I think chai tea is more like to my taste. Like I see. personally, I prefer that kind of tea to Chinese tea. So. One thing that you dislike about India? Okay, you go first. Yeah, Mike. Mike first. I don't know. I never visited. I'd always love to. So maybe one thing I say I dislike is it's too far away. It's too far away. Because I'm from. Nowadays it is not that difficult because nowadays normally planes are going very fast, so it's So I not have no that. Yeah. excuses anymore. Yeah. And Yumi, now your Oh, turn. Okay, I'm gonna say something really bad. Whatever you feel. Yeah. Okay, so first of all, I'm a traveler. I love traveling. I always wanted to go to India. Now, biggest problem for me is it's hard, or let's say nearly impossible for me to get an Indian visa because Okay. of the like situation between our countries. I really want to Yeah. go, but I really don't know how to get a visa, especially these 2 years. So that's the reason why I haven't been to India yet. And the second, like that's not really a bad thing. That's just a fact. But Yes. one thing is I'm actually scared of going to India alone because of like sometimes the news I saw on the TV and like because I think in India the laws about protecting women are not very strong. At least that's like from what I see on news on TV. So that's the part that I think India needs progress in. To improve. Yes. Yeah, to improve, and then Yes. one day maybe I'll feel like safer as a solo woman alone in India. So Yeah, correct. Yeah, this is something that we should take note of. One thing I can tell you, like whatever the media is saying about the relation between India and China, but honestly, if you go to India, you will see that people love Chinese people. Exactly, I don't think And it's a problem. it's like either like China, India, and India, Pakistan media always make this hype. But Yeah. if you go and ask the like normal people, the countrymen, they don't have any problem with Chinese people. They don't have any problem with Pakistani people. It's all about, I don't know who created these things. If you guys know, when did India get independence? Like on which year? Oof. You should know. So, so I think like Queen Victoria was the last empress of India, and she died in 1901. So I guess it's 1947. Perfect. Exactly. Really? What? Yeah. 19. It just came to me. Yeah. I don't think, and then Nine- it just popped out. To Yeah, exactly. 1947, Yeah. and it was 15th of August. Mm. Great. From whom did India get independence? So
Yeah, I think I think, yeah. that was us. Who led India's freedom movement, if you know? Gandhi. Exactly. I have a collection of his stamps. You have a collection of Gandhi stamp? Great, yeah. And what do you think, Mike? It was Gandhi? I think so also. Which other countries were part of India before independence? Pakistan. Yes. And which is the other one? One was Pakistan, yes, and the other was I have really uneducated guesses. Nepal? no, not Nepal, but Bangladesh. Bangladesh, yes, because Yes. I'm going to Bangladesh, so I did some homework. I wanted Exactly. to say Bangladesh, and I came to Yeah, so Yeah. Pakistan, Bangladesh, and India was a single country. yeah. Who is the most famous person from India that you know? Could be a few people, I guess. Indira Gandhi, Indira Gandhi? maybe. Yes, she was one of the famous person from India. Who else? Do you I want think? to say Mother Teresa. Mother Teresa, yes, she was one of the Yeah. most loved and famous Indian. Yes. Great. So you guys know so much about India. I would request both of you, if you kindly send some message or wishes to Indians on our Independence Day. That would be great. Yeah. Up to you. Okay, so I hope all the Indian friends who's watching this video to have a really amazing and blessed Indian Independence Day. Spend some time with your family and really celebrate this moment. Like it's something, from this country you'll feel very proud of, and I hope you really enjoy this day. Thank you very much. Maybe you can say in Chinese this one. 印度独立日快乐. Thank so, you, yeah, thank that you. means Happy Very nice. Indian Independence Day. Wow, great. Thank you. And Mike? Yeah, to echo everything Yumi said. I can also wish Happy Independence Day in English. But, I don't speak Chinese, although Yom Ha'atzmaut Sameach in Hebrew. So this is what I'd say to you people. Have a great Independence Day, and I hope to visit your country one day soon. Me too. Yeah, you Yeah. both are welcome to India, and I wish all the success and happiness in your life. Thank you very Thank much. you. Thank you. It was a great experience. Really nice. Thanks. तो चलिए दोस्तों, अब इज़राइल से एक दोस्त डैनियल, उनको पूछते हैं कुछ सवाल। अब देखते हैं उनका क्या जवाब होता है। Hi Daniel. Hi. So my first question is, when you heard the word India, what comes to your mind first? Multiculturalism, very colorful country, very warm and welcoming people, and very diverse nature and beautiful cities. One thing that you like and dislike about India. What can you dislike? I mean, I have nothing against. I think it's a very, very nice country, which actually gives respect to every nation and to any part of the world, regardless the political views or even religion views. And a good thing that I can say is, as I said, that it's a very accepting country, and generally, even if we're looking on geopolitics, it plays a very mild and a very calm and a peacemaking fashion role in the world. Thank yeah. you. Yeah, these are very nice compliments. Do you know when did India get independence? 1947, year Wow. before Israel, yeah. Correct, perfect. From whom did India get independence? From British Empire. Yeah, it's again same as you guys. Who led India's freedom movement? Yeah, Gandhi. Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, yeah. Everybody is giving this answer except one. And my next question is, which other countries were part of India before independence? Pakistan, Bangladesh. Wow, great. You have an intense
knowledge about India. Maybe Yeah. in some points also Burma, right? Myanmar. I That think. was much before British that. Raj. Maybe. Yeah, That in yeah, large exactly. extent. Yeah. Who is the most famous person from India that you know? Rakesh Mondal. Rakesh Mandal. By the way, Rakesh Mandal is Daniel's labmate and colleague. No, but generally I know, of course, I know the current prime minister. I know the prime minister Indira Gandhi. That was very famous. Prime Minister Indira Gandhi. Yes. What else? Raman from Raman Spectroscopy. Yeah, Professor C.V. Raman. Yes. Correct. Yes. Thank you. And, Thank you. Yeah, I think maybe I have more, but that's what comes up in mind. So Daniel, my final request to you that you say something or say some messages, wishes to our Indian people on our Independence Day. Yeah, so happy Independence Day, Azadi. And the most important thing is to continue the very strong bonds between our countries. So your people will come here to do their postdoc, pursue science, and we'll exchange our friendship for many years to come. Great, great. It was very nice. Thank you very much for your valuable time. And I can tell you one thing, you know too much about India. Yeah, that is for sure. It was very nice to talk to you. Thank you very much You're for your welcome. time. You're welcome. Thanks. तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा बाहर बैठे हैं और आप बात करेंगे राकेश भाई से। राकेश भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। राकेश भाई एक्चुअली वेस्ट बंगाल से है और उनसे भी कुछ पूछते हैं सवाल और देखते हैं राकेश भाई का क्या ख्याल है इंडिया के बारे में। हाय। सबसे जो सवाल पूछ रहे थे आपसे भी, मतलब जो इंडियन से जो भी सवाल पूछे आपसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। तो इजराइल का कौन सा चीज़ है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? ইসরায়েলের মানুষজন সবথেকে বেশি ভালো লাগে এবং তারা খুব ফ্রেন্ডলি। অন্ততপক্ষে আমি যতজনের সাথে মিশেছি এখানে আসার পর থেকে তাদের থেকে অনেক রকম উপকার পেয়েছি। পার্টিকুলারলি যখন আমরা যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম, যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম 7ই অক্টোবরের ঘটনার পর থেকে, সবসময় যে মানসিক সাপোর্টটা, যে আমরা পরিবারবিহীন হয়ে এখানে আছি, তারপরেও যে মানসিক সাপোর্টটা আমি এখান থেকে পেয়েছি, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকবো ইসরায়েলিদের। इजराइल का कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है जो आप इंडिया में वो चीज़ लागू करना चाहेंगे? ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এবং সেদিক থেকে দেখতে গেলে ইসরায়েলের থেকে কৃষি সংক্রান্ত অনেক টেকনোলজি আমাদের শেখার আছে। যেমন এই যে আমরা দেখি যে ইসরায়েল একটা মরুদ দেশ হয়েও কীভাবে তারা চারিদিকে সবুজ করেছে এবং সব কিছুই সম্ভব হয়েছে টেকনোলজির জন্য। তো আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষেরও আজকে প্রয়োজন, ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের আজকে প্রয়োজন, যদি আমরা বিশ্ব উষ্ণায়নের দিকে তাকাই, তো সেই সবুজ আয়নের স্বার্থে কিছু টেকনোলজি আমাদের এখান থেকে নেওয়া উচিত এবং সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত আমাদের দেশে, যাতে আমাদের দেশও আরও বেশি সবুজ হয়ে উঠতে পারে এবং ধীরে ধীরে আমরা যে উষ্ণতর দিনের দিকে এগোচ্ছি সেটা কিছুটা হলেও আটকাতে পারে বা বন্ধ করা সম্ভব হয়। तो आप कह रहे हो जो इजराइल का जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है वो हम लोगों को हमारे देश में भी उसको लेके जाना चाहिए और जो हमारे वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको ये लेके देना चाहिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए टेक्नोलॉजी का। इतना दिन से इजराइल में हो तो आप इंडिया का कौन सा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिस करते हो? অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছুই, তার মধ্যে প্রধানত মা, এরপরেও খাবার, বাঙালি খাবার সবসময়ের জন্য আমি মিস করি এবং হ্যাঁ, ইন্ডিয়া থেকে দূরে থেকেও ইন্ডিয়ান ভাইবসটা, সেই বন্ধু সার্কেল। আমরা হয়তো এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে ভাবি আমরা যে একটা স্বাধীন শহরে আছি, কিন্তু এই স্বাধীন শহরে পরাধীনতাটা অনেক বেশি কাঁদায় দিনের শেষে যখন বাড়ি ফিরি এবং সেখানে অপেক্ষা করার জন্য কেউ থাকে না। তার থেকে মানে ইন্ডিয়াতে যখন আমরা ওই পরাধীনতার মধ্যে থাকি, বাড়ির মধ্যে, বাড়ির নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থাকি, সেটা অনেক বেশি স্বাধীন মনে হয়। সেই স্বাধীনতাটাকে আমি মিস করছি। तो आप ये कह रहे हो कि आपका जो सबसे ज़्यादा आप मिस करते हो आपका फैमिली, आपका माँ, आपका दोस्त, आपका जो जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वो जगह का जो एक्चुअल माहौल है वो सब चीज़ें आप मिस करते हो। एक चीज़ इंडिया के बारे में जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আমরা মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করি, আমরা মিলেমিশে থাকি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, ভাষা নির্বিশেষে। সেটা আমার সব থেকে বেশি কাছের লাগে এবং ভারতবর্ষকে পুরো বিশ্ব থেকে আলাদা করেছে বলে আমার মনে হয়। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि जो
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो है इंडिया का सबसे अच्छा चीज़ जो आप लाइक करते हो। या पर्सनली मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एक चीज़ इंडिया के बारे में जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। এটা বলা খুবই কঠিন, কারণ ভারতবর্ষ মানেই হয়তো ভারতবর্ষের ভিতরে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে না এই জিনিসগুলো হয়তো না করলেই ভালো হয় বা এইটা হয়তো খারাপ, কিন্তু আমরা যখন দেশ থেকে দূরে চলে আসি সেই নারীর টানের জন্য আমরা মনে হয় যে আমাদের দেশ ভালো হোক খারাপ হোক সমস্ত কিছুই আমার। बहुत ही अच्छा। तो आप कह रहे हो कि हर एक चीज़ का कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जो भी है, लेकिन उसके बाद भी आप इंडिया में हमेशा मतलब रिटर्न जाना पसंद करोगे। और तो इसका मतलब है आप इंडिया से बहुत प्यार करते हो और हमेशा इंडिया में आप रिटर्न जाना पसंद करोगे, ये कह रहे हो आप। बहुत ही अच्छा राकेश भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा तरीके से जवाब दिया और उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो दर्शक है, पर्टिकुलरली जो वेस्ट बंगाल से है, वो लोग सब आपका जो सवाल है और सवाल का जो जवाब आपने दिया वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग मतलब पसंद करेंगे। आपका इंटरव्यू क्लोज करने से पहले अगर आप जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है उस मौके को थोड़ा अच्छा यादगार बनाने के लिए अगर आप इंडियन वासी को थोड़ा कुछ उइस मैसेज आप देना चाहोगे तो वो सबसे अच्छा होगा। সবার প্রথম সবাইকে আমার তরফ থেকে অন্তর থেকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা এবং আশা করি আগামী দিনগুলো আমাদের আরও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ হয়ে উঠুক এবং আমরা সমস্ত ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে একসাথে থাকতে পারবো, আগে যেমন ছিলাম আবার আমরা আরও একত্রিত হয়ে উঠতে পারবো এবং সেই পথে চলতে পারবো। এই শুভেচ্ছা রইল। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा था, राकेश भाई ने भी बहुत अच्छे मतलब सारे सवालों का जवाब दिया और उनका जो सोच है वो हम लोगों के साथ शेयर किया। सो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हमारे इंडियन फ्रेंड बालाजी से। चलिए बालाजी से अब बात करते हैं और उनसे भी कुछ उनका जो सोच है वो जानते हैं। मैं बालाजी से इंग्लिश में पूछूंगा, कुछ जवाब वो इंग्लिश में देंगे और कुछ जवाब तमिल में उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा देने के लिए। सो चलिए अब बालाजी से कुछ सवाल पूछते हैं। टेल मी वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट अबाउट Israel. I don't know about entire things. Like in the Wise Man, I like the people are very kind. Whatever things they are very helpful and those things. Those things I really like it. Yeah, so people are very kind. They are very helpful. Yes. Very nice people. Yes. Yeah, that's true actually. One thing that you take from Israel and implement it in Israel, in India. Okay. I feel like the personal freedom. Like here, even women are there is no gender discrimination. Like much, but I feel in India it is there. Maybe that things will be better. Give them freedom, like Okay. free hand, like. Okay, the free hand. Okay. Yes. Everybody should be free Yes, to yes, do yes, yes. They, whatever they want. whatever they wish to do, let them do it. Like no restriction or something. Correct. Perfect. Perfect. Very nice. You are here for quite some times now in Israel. Yes. What do you miss the most from India? Like the emotional attachment is not there here. That is the thing I am missing. Like I am missing the family. Those things. It is more emotional to me. So that is missing from. So yes. okay, you can say that in Tamil also. இங்கே இருக்கிறது என்னன்னா அங்கே நம்ம உறவுகள்லாம் இருக்கும், அதை விட்டுட்டு நம்ம தனியாக இருப்போம். இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் பழகுறோம். ஆனால் நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஃபேமிலி தான் இருக்கும். அது இல்லாததுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Very nice, very nice. One thing that you like the most about India? I think the unity, like we are like a different culture, different thing, but still we are united together. That things I really liked it. Yes, yes. have- The unity in diversity. Yes, yes, yes. One thing that you dislike about India? I don't know. I like the caste system, the religious things. They're try to like diverse the people in some those kind of things. So those things I don't like. Those things should not be there. Yes, like Yes, yes. let them follow whatever their own things. Let them how we are unity, how we are surviving like together. Even though we have some conflict are there, but we are friends. Like we can talk each other. We can make the things. Exactly. The best thing about India is the
unity and diversity, Yes. and it should last at whatever cost. Yes, yes, yes. This is the beauty of India. Yes. So now I would request you to say your greetings or wishes to our fellow Indian on our very own Independence Day. Yeah, I wish you Independence Day for every Indians. Like we are also part of it. And maybe you can speak the same thing in your mother tongue. Yeah. இனிய சுதந்திர நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you very much. It was very nice. Bala, talking to you was very nice, and thank you very much for your valuable time. We hope that India continues growing and prosper, and Jai Hind. Yeah, जय हिंद. सुबह से जितना भी लोगों को मैंने पूछा तो सब ने बहुत अच्छे से और ईमानदारी से जो उनका सोच है वो रखा आप लोगों के साथ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये बहुत लाइक करेंगे, और लोग इंडियन कल्चर, इंडियन फूड, इंडियन पीपल सबको लाइक करते हैं. दुनिया भर जितना लोगों से मैंने पूछा सब ने इंडिया के बारे में बहुत अच्छा बात कही है. तो मुझे भी इंटरव्यू करते हुए बहुत अच्छा लगा. जब मैं सबसे सुन रहा था इंडिया के बारे में इतना अच्छी बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे भी गर्व महसूस हुआ. आई लव इंडिया एंड आई कैन से जय हिंद.